In today's video, we will cover a topic that is decline of the Mughal Empire. And before discussing this topic, we will look the chronology of Mughal emperors from its founder Babur till its last emperor Bahadur Shah. Second are also known as Bahadur Shah Zafar, because in most of the exams the chronology of these emperors have been asked. So the founder Babur, after him Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb ruled. And after the death of Aurangzeb in 1707, the rulers came to be known as later Mughals, which include Bahadur Shah I, Jahandar Shah, Farooq Siyar, Rafiud Darjat, Rafiud Daulat, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Alamgir II, Shah Jahan III, Shah Alam II, Akbar Shah II, and last Bahadur Shah II are also known as Bahadur Shah Zafar. The foundation of this empire was laid down by Zahiruddin Babur in 1526. This date is also famous for the first battle of Panipat, which was fought on 21st April 1526 between Zahiruddin Babur and his opponent Ibrahim Lodi. And Babur says, "The dream of conquering India was not far from my mind," as he himself makes mention that after he conquered Kabul in 1504 and his victory at the Battle of Panipat, Babur says, "I had never ceased to think of the conquest of Hindustan." And this Mughal Empire was expanded to its full glory by Emperor Akbar in the second half of the 16th century. And it was during the time period of Aurangzeb this Mughal Empire began to decline rapidly. Now, there is a debate among historians which put their views regarding the decline of this Mughal Empire. We have two group of historians. One group of historians, they hold responsible Aurangzeb's divisive policies, those policies which were created or which were made by Aurangzeb as a factor for this rapid decline, in which his religious policies are particularly blamed, because these policies alienated the Hindus, जो उस टाइम पॉपुलेशन का एक मेजर पोर्शन था। और इसके बाद औरंगजेब की एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री कैंपेन्स भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना जाता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। और जो ये मिलिट्री कैंपेन्स वेस्टर्न इंडिया के दो ऑटोनॉमस स्टेट्स के खिलाफ थी, दैट इज बीजापुर एंड गोलकुंडा। Also, his expansionist military policies against the Marathas have been considered as a reasonable factor for this rapid decline. But on the other side, another group of historians, they believe that roots of Mughal decline lay in the institutions and systems intrinsic to Mughal administration. So they shift from personality and these kind of specific policies to institutions and the system of administration. But both of these historians believe that the process which this process of decline was started during the time period of Aurangzeb, and after him it was not arrested, it was not handled by his weak successors. फर्दरमोर ये जो डिक्लाइन की प्रोसेस ये और वर्स होती है
due to the recurrent wars of succession among three sons of Aurangzeb. On the one side, Prince Muazzam, and on the other side, Muhammad Azam and Kambakhsh. इन थ्री सन्स में प्रिंस मुअज्जम विक्टोरियस इमर्ज होता है by defeating and killing his two brothers Muhammad Azam and Kambakhsh in 1707 and 1709. And Prince Muazzam assumes the title of Bahadur Shah Husht, and he occupies the throne of Delhi, which was considered as a major power center in the entire Eastern Hemisphere in the first half of the 17th century. जो कैपिटल सिटी मुगल्स की थी दिल्ली, वो पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एक पावर सेंटर माना जाता था. बट इसके बाद जो 50 ईयर्स आते हैं तो साइंस ऑफ डिक्लाइन स्टार्ट होती है, वो विजिबल होती है इस कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली में. और ये जो डिक्लाइन प्रोसेस ये और ज़्यादा ख़राब होती है बिकॉज ऑफ मुग़ल आर्मी की वीकनेस से. क्योंकि नेशनल पावर के जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी, मैन पावर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आर्मी भी माना जाता है. तो जब एक एम्पायर की आर्मी या एक कंट्री की आर्मी वीक होती है तो उस कंट्री के लोग खतरे में होते हैं, उस कंट्री के बॉर्डर्स सेफगार्ड नहीं होते हैं और वो कंट्री एक डेंजर में होती है. उसी तरह जब मुग़ल आर्मी वीक होती है बिकॉज़ कुछ रीज़न्स की वजह से, जिनमें से सबसे पहला रीज़न है नो मिलिट्री रिफॉर्म्स. दूसरा रीज़न इस आर्मी के वीक होने का है इनकैपेबल कमांडर्स. तीसरा और एक रीज़न है आर्मी के वीकनिंग होने का नो न्यू टेक्नोलॉजी. अगर हम 1857 रिवोल्ट की बात करेंगे, this revolt was crushed or controlled by the British Army. So army plays an important role for the safeguard of a country. When this Mughal army weakness, two things emerged. तो वो दो चीज़ें क्या नज़र आती हैं. नंबर 1, इंटरनल रेबेलियंस स्टार्ट होते हैं एंड फॉरेन इन्वेजन्स. और अगर हम इन इंटरनल रेबेलियंस की बात करेंगे तो सबसे पहले इट वर मराठास अंडर शिवाजी हु चैलेंज्ड द रूल ऑफ औरंगजेब, एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मराठा के प्लंडर और इंक्रीज हो गए. जैसे कि 1738 में उन्होंने कैपिटल सिटी जो दिल्ली थी उसको लूटा, एंड इवन जो दिल्ली के इर्द गिर्द बाकी एरियाज थी दे वर आल्सो प्लंडर्ड इन 1738. और अगर हम फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे तो इट वाज इन्वेजन फ्रॉम द पर्शियन किंग नादिर शाह इन 1738 to 39. जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू. और इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को औरंगज़ेब ने काफ़ी हद तक सेफ गार्ड रखा था. बट आफ्टर हिज डेथ इन 1707 द सेफ गार्डनेस ऑफ दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाज नेग्लेक्टेड. और जो ये नेग्लेक्टनेस ऑफ दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थी, ये कब विजिबल होती है
जब नादिर शाह अटैक करता है। सबसे पहले वो लाहौर पे अटैक करता है। इसके बाद कैपिटल सिटी जो दिल्ली थी उसको बचाने के लिए मोहम्मद शाह एंड निज़ामुल मुल्क मार्च करते हैं टूवर्ड्स कन्फ्रंटिंग नादिर शाह। तो कैपिटल सिटी को बचाने के लिए फोर्स एक साइड से निकलता है मोहम्मद शाह और निज़ामुल मुल्क की तरफ से, और दूसरी तरफ से इस कैपिटल सिटी को प्लंडर करने के लिए, इस कैपिटल सिटी को लूटने के लिए नादिर शाह और उसका लश्कर आता है। एंड बोथ ऑफ दीज टू फोर्सेस met at Kernal on 13th February 1739, and this is also famous for the Battle of Kernal। और इस बैटल में मुगल्स बहुत ही बुरी तरह से डिफीट किए जाते हैं। देयर आर्मी was crushed and Muhammad Shah and Sadat Khan, that was governor of Awadh, they were taken prisoners, and after this Nadir Shah marches towards Delhi and he ordered a terrible massacre। इसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देता है उस वक्त का जो कंटेम्पोररी हिस्टोरियन है, दैट इज आनंद राम मुखलिस। He says that Nadir Shah took 60,000 rupees and many thousands of gold coins, gold of 1 crore rupees, jewels of 50 crore, Kohinoor and peacock thrown with him to Iran। So this internal rebellion and foreign invasion, it showed the weakness of the Mughal Empire, it showed the weakness of Mughal army, and Nadir Shah's invasion inflicted a heavy damage on the Mughal Empire। After this 1748 में जो अफगान की तरफ से एक इन्वेजन आता है वो रिपेल किया जाता है, बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ नादिर शाह in 1747, Ahmad Shah Abdali, also known as Ahmad Shah Durrani, he was chosen as the king of Afghanistan, और उसको जो टाइटल मिलता है दैट इज दुरी दुरानी और पेरल ऑफ पेरलस। एंड he also began invading India during Muhammad Shah's reign in 1748। लेकिन इस टाइम ये अफगान इन्वेजन जो अहमद शाह अब्दाली की तरफ से किया जाता है इसको रिपेल किया जाता है, और इस टाइम के बिटवीन दैट इज 1748 टू 1767 अहमद शाह अब्दाली मुगल एम्पायर को 7 टाइम्स इन्वेड करता है और प्लंडर भी बहुत बार करता है। लेकिन इट वाज नॉट द एंड, बिकॉज जो 4th इन्वेजन होता है अहमद शाह अब्दाली की तरफ से इन 1756 टू 1757, इस टाइम वो ओवररन करता है पंजाब को, मुल्तान, एंड आल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली वाज सैक्ड। इस टाइम जो इंडिया में 2 मेजर पावर्स थे, वन वाज मराठास एंड अनदर वाज मुगल्स। अब इस अफगान थ्रेट को दूर करने के लिए मुगल्स के पास एक ऑप्शन था टू सीक हेल्प फ्रॉम मराठास, बट मराठास वर इटसेल्फ डिफीटेड, किल्ड एंड बाय Ahmad Shah Abdali on 14th January 1761, which is famous for the third battle of पानीपत। अब जो 2 पावर्स हैं मराठास और मुगल्स, वो दोनों अब्दाली के थ्रू डिफीट खाते हैं।
तो अब कंट्री को किस तरह बचाया जा सकता है? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, टू repel the Afghans and to safeguard the country. But this was neither done from the Maratha side nor it was done from the Mughals. It was only due to the revolt in the army of Ahmad Shah Abdali which forced him to return to Iran. So in nutshell, जो नॉर्थ इंडिया में उस टाइम सिचुएशन थी, it signified that the glorious days of Mughals had passed away. So ये थोड़ा बहुत brief discussion था, and after this we have to look at the views that were given by the historians regarding this decline and the criticism which is also important from the exam point of view.